Hello everyone, planning and managing rural tourism. Video lesson 9th. Content for the course would be rural tourism management, role of project management, sustainable transport in the countryside, impact of rural tourism and sustainable rural tourism. The course would include total 20 video lessons. And the content for session 9 would be Introduction to Impact of Rural Tourism, classification of impact of rural tourism, that is like economic impacts, socio-culture impact, environmental impact and health impact as well. The last is factor favoring tourism, which means the favoring tourism factor we would discuss about here. Now, come to our introduction to impact of rural tourism, which consists impact of rural tourism in India, classification of impact of rural tourism, and factor favoring rural tourism in India. So, let's begin with the impact of rural tourism. Here, the first point arise is rural tourism is growing in the world in general and India in particular. It has led to the establishment of many infrastructure in tourist origin and destination regions. Many facilities are addressed concerning the need of the tourist. There is a great interaction of tourists with land and people of area from where they originate or they reach during tourism endeavor. Because of the interaction, certain impacts are obvious during this engagement. Rural tourism is considered as an industry. This industry would include or involve the involvement of people from an urban to rural places. The movement of people require infrastructure related with the transport. Moving to the rural place in turns require the accommodation for the people, which further leads to food and drink for them. Stay at a place lead to the interaction with the people. All these are generating job opportunity and economic activity. Interaction with local people is further associated with intermingling of the culture of different origins. Consumption pattern of tourists is different from the local people. Waste generation and disposal of same is great challenge. In other words, the impact of tourism could be classified as, you can see that here, effect of tourism development in rural areas, which would be classified as economic impacts, socio-culture impact, political impact and environmental impact as well. So let's start with the economic impact. As you all can see, the importance of economics of this sector could be judged by the number of people involved in it as well as the income generated. Directly or indirectly, large number of people are involved in this tourism sector. It includes area like transportation, accommodation, food, ticketing, guiding, boating, rafting, trekking, and maintenance of the tourist sites, etc. Host provides all required services and facilities to the guest. The guest pays for all these services. Hence, the tourism generate considerable profit and benefit for the people of the origin place of the tourist as well as people on the destination. By developing the infrastructure in various tourism relates activity enables better movement facilitate from one place to another for both incoming or outgoing tourists as well. One of the primary motive for developing a country like ours is to promote tourism destination for foreign tourists. It helped to get the foreign exchange.
A good amount of foreign reserve help to maintain a country's balance of trade. Apart from the balance of trade in the country, it also generates employment opportunity for the unemployed youth. In this way, they can get their livelihood and income is generated for the survival and well-being. But tourism is not about all the time very good for the economy. It has a negative impact as well. Now, up going to the social culture impact. When we are talking about social cultural impact, society is a community or a broad governing or grouping of people living in a certain area that has a common traditional, institutional, and activities as well as interest. In fact, society is a system of relationship of people who share some sense of common identity. It may be small like a family, locality, or large as a whole of a nation. Culture is the practice of that society which binds people of the society together. It includes manners, morals, belief, behavior, values, and norm as well. A good manner is socially acceptable a way of relationship. It includes respect, care, and consideration for the other. Morality is a set of rules, principles, and duties applicable to group of people or a society which is generally independent of reason. Belief in the foundation of attitude. Attitude determines the outlook and thinking process of an individual as well as the society. Behavior is the way in which an individual or member of the society behaves or acts. It is viewed with the reference to phenomena, incident or an action. It is therefore a response of the member. Norms are the normal or formal rule of the society. It regulates the member of the community, group or society in maintaining harmony. So, values are those ideals that society hold above, like honesty, respect, and faithfulness. The values are building blocks of norms. Due to interaction and changes are observed in altering value system, behavior including losing one indigenous identity. Deviation are seen in community structure, family relationship, collective traditional lifestyle, ceremonies or morality. Apart from this, some positive impacts are also observed in socio-culture impacts. Now, let's come to our political impacts. If we are talking about political impacts, they are seen on the tourism rather than tourism impact on the political directly, but indirectly the government of developed countries from where the well of tourists come and influence the governments for a congenious condition to all provided by the visitors. Everyone is very much concerned about the safe and secure journey to the tourist destination and back to the origin place. To get the know the visited area as well as fun and enjoyment is the main objective of tourism. Tourists are for them and hence they wish to go to the areas which fulfill their objective. They do not feel safe and secure at all the places of tourist interest in the world. A tourism policy gives the direction to the tourism. This policy is a set of rules, regulations, guidelines, and directives for the development and promotion of tourism. It provides a framework which with the collective and individual decision affect the tourism development. Government can create a code of conduct for a tourist. There are some outlooks which encourage tourism and some create obstacle as well. It come in our political impacts. Now come to our last impact, which is environmental impact. In this, it is the total surrounding or condition in which a person, animal, or plant lives or interacts. A person environment is made up of
all that is directly or indirectly associated with the living condition. It includes houses, building, fellow persons, animal, plant, land, water, temperature, light, air, flora, and fauna, or you can say that other human developed infrastructure as well. The living plant and animal not only exist in the surrounding but also interact with each other. Such interaction also impact significantly depending upon the dynamics of an interaction. Tourism brings huge number of people to an area continuously who have diverse attitude. Huge number of people arriving at those locations possesses intense pressure on the various resources. More and more infrastructure are created to accommodate them, due to which great changes in the landscape of area are made. Some of the environmental improvements are to be observed to attract more and more tourists as well. Therefore, tourism helps in preserving the environment for sure. Now, come to the main factor which are in favoring with the tourism. As India is a vast country with biophysical diversity, this vast expanse of land is occupied by the rainiest part in the northeast to the driest part in the west. It covers the island, a coastal land that we also call as sea surface, and high mountain peak as well. It covers lush green valley, valley of flowers, precipitous contain which are mountain slopes, beautiful waterfalls, unending plant plain, dry desert, etc. Apart from them, it also possesses the caves, monuments, places of historical and archaeological importance, religious structure, trek routes, adventure tourism like rock climbing and rafting, etc. Many of them are important for virgin environment, recreation center, health educating centers, apart from natural scientific sport and places in various parts of the country. The country invites tourists from various parts of the world throughout the year depending upon the interest of the visitors and the tourists. Winter climatic conditions of South India are favorable destination for the tourist, while the Himalayan region is sought after in the summer. All these factors are favorable for the tourist of the nation and international origin as well. Once a place is visited by many tourists, the visiting as well as from where the people are originating do produce some consequences. Those consequences could be good as well as bad also. Let us understand by those up above mentioning those craft or impacts. रोशन हो जो सवेरा सूरज की किरणों से, कोई अंधेरा रोक नहीं सकता मेरे गांव को आगे बढ़ने से। हर एक आंगन से महकेगी हमारे गांव की मिट्टी, जहां अलगू की चौपालें और काकी की फटकारें रहट के चाल पे थिरकेगी मेरे गांव की मिट्टी। चली आएगी धानी ओढ़ चिन्हरिया यहाँ सरसों, छटा बन बन के बिखरेगी हमारे गांव की मिट्टी। जहाँ पनघट की गागर पे लिखा है नाम राधा का, बड़ी बनठन के निकलेगी हमारे गांव की मिट्टी। इसी मिट्टी में घुटने पे चले श्री राम और कृष्ण, नहा गंगा में सवरेगी हमारे गांव की मिट्टी। मिट्टी यही है गांव की सोने सी अनमोल, कहते इसको माँ सभी इसकी जय जय बोल। सबको ये है पालती इसको शीश लगाए, उपजाती धन धान्य है धरती माँ कहलाए। इसकी सौंधी है महक मन को लेती मोह,
हरियाली चहुं ओर है ये अखियों को सो। खेले हैं जो गोद में जी भर कर भरपूर, रिश्ता दिल से जो जुड़ा कैसे जाए दूर। जब भी सावन माह में बारिश हो घनघोर, सुंदर लगे वसुंधरा खुशबू हो चहुओर। माटी मेरे गाँव की लगे निराली खूब, चिकनी रेतली कहीं भिन्न भिन्न है रूप। कैसे घास मैदान है कहीं खड़े हैं पेड़, खेत दूर तक ही दिखे और दिखे हैं मेड़। गाँव की मिट्टी से पले इन शहरों का पेट, क्यों है वह लहचार अब चढ़ा कर्ज की भेंट। नहीं कृष्ण की नहीं राम की नहीं भीम की सहदेव की, नकुल की नहीं पार्थ की नहीं राव की नहीं रंक की, नहीं तेज तलवार और धर्म की, नहीं किसी की नहीं किसी की। धरती है केवल किसान की, धरती है केवल किसान की। उसी गांव की मिट्टी की तलाश में हम आ पहुंचे हैं गांव ढंडारडू। केवल 1500 की आबादी वाले इस गांव के लोग इस छोटी सी दुनिया में खुश एवं संपन्न महसूस करते हैं। गांव में आते ही साग की भीनी भीनी खुशबू ने इसने तो मेरा मन ही मोह लिया है। मोटी रोटी है, इसको चकले बेलने के ऊपर नहीं बनाया जाता। इसको गांव की औरतें हैं जो सिर्फ हाथ का इस्तेमाल करके बनाती है। और ये है फेमस जिसको बोलते हैं साग। इसको इस रोटी के साथ और मक्की की जो रोटी है उसके साथ खाया जाता है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और कई बार जब शहर से मेरी सहेलियां आती हैं वो भी इसको खाना बहुत पसंद करती हैं। न केवल साग, गांव के तबेलों का ताजा दूध, बनता हुआ गुड़ और ये मक्खन ही है जो दूर दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शहर के लोग जो अपने कल्चर ट्रेडिशंस से दूर हो गए हैं, वे गांव में वापस आकर दोबारा उन चीज़ों को जी सकते हैं और जीना भी चाहते हैं। तीज त्योहार के दौरान तो रौनक इतनी कुछ हो जाती है कि बाजारों में पैर रखने की जगह भी नहीं होती। नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू है जी।
मैं शेरगिरी का लड़का जी, तमिलनाडु से। हाँ जी। जो मंदिर के पुजारी थे जी। हाँ जी। अब तो वो सुधार गए जी। हाँ जी। तो इस मंदिर को कितना टाइम हो गया है? ये हमारे बुजुर्गों ने बनाया था जी। पहले यहाँ पे छोटा सा मंदिर था जी। हाँ जी। तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया भोलेनाथ का, माता पार्वती। ये सुनने में भी आया है कि ये यहाँ हमारे गांव का पहला मंदिर है सबसे। हाँ, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। पहले सारा गांव यहीं पे आता था मत्था टेकने, अब भी आता है जी। हाँ जी। जिसको लगन है इसकी भोलेनाथ की सच्चे मन से, वो यहीं पे आता है। और यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से बहुत दूर दूर तक के, बिहार के, उड़ीसा के, बंगाल के भी आते हैं, बहुत दूर दूर तक के आते हैं। इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो ऐसी चीजें है जी, जैसे सावन के महीने में निकलते हैं जी, 5-5 बिच्छू निकलते हैं, भोले के दरबार में आते हैं जी। हाँ जी। बहुत मानता है जी यहाँ पे। और बाबे का तो यहाँ पैर ही रहता है नाग देवता का। यहाँ पे नाग देवता रोज आता है जी। आप कितने साल से यहाँ सेवा कर रहे हो? मैं तो यहाँ 55 से आता हूँ। अपने पापा जी के, अपने बापू के साथ आता था जी। हाँ जी। उसी के साथ आता था जी। मंगलवार को भी ये यहाँ तो आपके मंदिर थे, बहुत पुराना है, ये तो पता है। तो भी सच्चे मन से बंदा आता है। हाँ जी। आस लेके आता है, श्रद्धा लेके आता है, तो यहाँ सब पूरी होती है। तमिलनाडु से स्थित कुछ दूरी पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है मानक टाबरा साहिब। यह गुरुद्वारा बहुत ही प्रसिद्ध है। इस गुरुद्वारे के पीछे एक बहुत ही सच्ची मान्यता है जिसे सुनकर लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं। एक बार जब गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी यात्रा से लौटकर रायपुर रानी शहर पहुंच रहे थे, जो कि गांव तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, गुरु गोबिंद सिंह जी आकर जब राजा से मिले तथा उन्हें ठहरने और पानी के लिए बोला गया, तब राजा जी ने साफ इनकार कर दिया। तब गुरु गोबिंद सिंह जी वहां से चल पड़े और चलते चलते पानी की तलाश में एक स्थान पर पहुंचे और घने वृक्ष के नीचे बैठ गए। पर गुरु गोबिंद सिंह जी को कहीं पानी नहीं मिल रहा। प्यास लगी थी, तब उन्होंने हाथ का इस्तेमाल करके धरती से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। जब इस बात का रानी, जो कि रायपुर रानी की रानी है, उनको पता लगा, तब वो दौड़े दौड़े गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आई। तब उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को पानी पूछा, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो पानी अस्वीकार किया। परंतु उनकी यह भक्ति भावना देखकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया, जो कि था कभी रायपुर रानी शहर में न बाढ़ आएगी और न जान माल पानी की हानि होगी। और रायपुर रानी शहर का नाम पहले रायपुर था, जो कि बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा से रायपुर रानी बना। धन्यवाद। पर्यटन की वजह से गांव के लोगों की आमदनी काफी हद तक बढ़ रही है। यहाँ तक कि मेलों के वक्त तो आमदनी 2 गुनी से 4 गुनी हो जाती है। मेलों की बात हो ही रही है तो यहाँ के दशहरे के मेले को कैसे भूल सकते हैं। पर्यटकों की संख्या इतनी हो जाती है कि संभाले नहीं संभलती। यहाँ तक कि सीमेंट चेयर्स, स्टोन क्रशर व कई और फैक्ट्रीज का निर्माण भी किया गया है। My name is विनोद कुमार, my village बतौर, पोस्ट ऑफिस रायपुर डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। मैं यहाँ पे 1 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आज से 10-12 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, बिल्कुल जंगल था। अब यहाँ पे इंडस्ट्री है और यहाँ पे चाय पानी का इंतजाम भी है हमारा। पहले यहाँ पे कोई दुकान, कोई शॉप वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन अब कुछ सालों से बहुत तरक्की हो रही है। इंडस्ट्री एरिया आ रहा है इधर,
हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे को घर के बाहर रोजगार मिल रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। बढ़ते पर्यटन को देखते हुए गांव में प्रगति भी उच्च स्तर पर है। गांव की सड़कों को बड़ी सड़कों से जोड़ दिया गया है। एक नए प्राइमरी स्कूल का निर्माण भी हाल ही में हुआ है। सूरज के रंग देखने हो तो कभी मेरे गांव आ जाना। सूरज के रंग देखने हो तो कभी मेरे गांव आ जाना। मेरे खेत मिलेंगे तुम्हें यहीं खड़े हुए। कभी किसी रंग में मिल जाने का मन करे तो मेरे गांव की मिट्टी में रंग लेना। हवा से बातें करती हूँ रोज मैं, मन की शांति से मिलती हूँ रोज मैं। मेरे कच्चे मकानों में सुकून है। हाँ जी सुनो, मेरे गांव के लिए मेरे अंदर जुनून है। पुराने मंदिरों की पवित्रता है मेरे गांव में। शुद्ध आहार की कुंजी है मेरे गांव में। हर कोई मेहनती है मेरे गांव में। ओ जी आइए तो कभी आइए तो मेरे गांव में। ओ जी आइए तो कभी आइए तो मेरे गांव में।